Yeah, so extreme volumization in young lips. That means who all are the categories? Usually they are transgender, then there are models, actors, you know, and maybe brides sometimes. Makeup artist. Makeup artists, yes, because they are the ones who have to, they can first, locate the deficiency in the lip volume. Yes, I have makeup artist, taking lip filler, so that's why. Yeah. So these are the categories who are asking for this demanding. Now, why the demand for more? Because first of all, transgenders, yeah, for gender neutral people, like eyes and lips are basically, defining your, femininity. Hmm. So, which is why they're very particular about lips and eyes. This and cheeks, lips, eyes, and cheeks. Lips, eyes, and cheeks. Three things. So, lips is one of the most important things. Why models? Because when they are being photographed or when they are being pictured, they have to apply an extra layer above the white roll so that their lips appear voluptuous. Hmm. So this can, lip filler can help them do that without doing makeup adjustments. Yeah, the pictures I've shown you, again, this is that's a case of gender transformation. Transformation, yeah. And now he is into that process now. हाँ, So अभी वो मेकअप करने के बाद whenever he goes to party तो he dress up like a girl. girl, एंड yeah. मेकअप करने के बाद फिल्टर लगाता है तो वो लिप्स बहुत पाउटी आता है उसका. हाँ, सो हाँ. अभी मैंने उसको रेस्लिन के अराउंड मुझे लग रहा है 0.7 ml दिया है. हम्म. एंड उसके अंदर मुझे अभी जो उसके लिप्स में है थोड़ा हाइड्रेशन फील हो रहा है. दैट्स ऑल आई कैन फील. एंड लिटिल बिट वॉल्यूमाइजेशन ऑल्सो आई कैन फील इन हिज लिप्स. बट ही wants still more pout, More. as I have shown you the video, Yeah, yeah. which he has given. Mm-hmm. Hmm. So according to the video, he wants more of the medial pout. He doesn't want Okay. lips. His The already his lateral one. lips are broad. So lateral Yes. augmentation he is not aiming for. He is more wanting into the Hmm. central augmentation. So we Hmm. discuss the techniques and then you can, decide. Okay. So patient selection, if an extreme increase in lip volume is desired, the lips are built up through extreme administration of volume. And one of the side effects will be that hematomas or swellings are normal because sharp needles are being used over here in this technique. So first technique is bolus and fanning. In this, the layer which we inject in this is intramuscular layer. Hmm. The maximum volume that can be given is 1 ml to 1.5 ml per session. Hmm. Right? And needle is 27 to 29 gauge sharp needle. So these are the points, 4 medial points and 4 lateral Okay. points, right? And I couldn't draw the arrows. The 3 arrows are here also, right? Okay. Got it. First, you have to inject medially, 1, 2, Hmm. 4, right? And then you Hmm. see how much laterally you need to inject, because what these four medial 4 points will give the medial projection, the pout. Hmm. The lateral 4 points are given to make, the lip to give a uniformity to that look. Right. Right. So transition should be smooth. Yes, smooth transition. So what happens is when you put 4 boluses over here, so Acha, these are boluses. yeah, these are boluses. This is a technique which is Okay. bolus and fanning combination. So medial 4 are boluses and the lateral 4 are fanning. I said I couldn't draw the arrows over here. There was some problem. No, no, no worries. I can understand. Medial to exact location would be under the this cupid bow. Yeah. This Yeah, it should be horizontally like this. It's coming like the medial okay. tubercles and the lateral tubercles. Now, what happens if you inject too much bolus into this? A break may be formed. A line is formed like this, a break. So, which is why to Yes, yes. avoid that, fanning is required over here, Yeah. right? So, this Fanning is required over laterally. lateral, yeah, in the lateral leg, Okay. right? Because I've never done boluses in lip. I Mm. always, most of the time, I try to decant my filler into BD syringes, Okay, and I try to give that at multiple points. okay. That And and we're coming to that technique also. So you can do a okay. combination from what So he is. इसमें hydrate, इसमें in bolus,
is it possible to, spread the filler? Massage. या because वो एक जगह पे बहुत ज्यादा, या वो Mhm. देके छोड़ दो बस आप. I'm just coming to all that. So ठीक this है. is how you do it. So these are the 4 boluses that are given, and then 4 fanning, 4 quadrants fanning, right? So volumization. So here you have to be careful that you are volumizing, but you are not avoiding the duck bill effect. And here the migration chances are very high because a lot of product is being given medially. So best technique is medial boluses first and lateral fanning second. Hmm. No massage should be done in this because there are high Okay. chances of migration, Okay. right? But many experts actually, many experts say that is good and all that. But I don't know. It's up to your discretion, because we want the Hmm. filler to be there only, and we don't want Hmm. to migrate here and there. And I think we leave it for spread, by the natural movement of the lips. Yes, by the natural movement of the lips. Right? Okay. So here also, And how much would be the quantity? quantity is like you can inject per point is like 1 to 1.5 ml is total. So you can do 0.2, 0.2, 0.3, 0.3 in the medial, and the Okay. rest you can do. So upper lip gets less as compared to the lower lip. So when we are Yeah. doing like here we will do 0.2, 0.2 and 0.3, Hmm. right? Here also Okay. 0.2 and 0.3. But if you're doing 0.3 here, then 0.4. Because lower lip in Asian Yeah. Should is be more, larger than the. yeah, upper lip. So second technique is volumization, which is by bolus only. Earlier one was bolus Hmm. and fanning both combined, right? Hmm. Now what another important thing is that the lateral injections will make your Hmm. lips look wider. It will make the mouth Yes. wide. That, Yes. Yes. Yeah. Most of my patients says ki they want a, they don't want a wider look. But yeah. but you know what they demand? They demand increase in height in their lateral part of the lip. तो So मुझे that वो नहीं समझ आता कि कैसे करूं मैं. we are coming to that. Hmm. That is why there are Okay. 3 ठीक है. different techniques. Yeah. Okay. Because Okay. we have such finicky patients. Either हाँ, ये और चाहिए, इधर they नहीं will show चाहिए. lips of somebody else. I want Yeah. such lips. मैंने कहा I cannot make exactly those lips, Huh? but I can, make the best out of yours, whatever No, you you should want. tell them And I that keep you on can have saying such no. lips only if you have the same eyes and same cheeks and same nose. I can give you same. Yeah, yeah, exactly, exactly. हाँ, बट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं फेस सेंटर तो मीडियल तो फिर भी हो जाता है मुझसे, हाँ, हाँ, हाँ. लेकिन जब लैटरल होता है ना, मैं क्या करती हूँ, आई एंड अप इन इंक्रीजिंग द Width. डायमीटर, वो पूरा जो रहता है ना, वो विड्थ मेरा बढ़ जाता है, मैंने ये No, देखा no है, need. वहां कुछ गड़बड़ मैं करती हूँ, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए. You will see. हम्म. Second technique is again patient selection for second is they desire strong augmentation, they desire beautification, and they might want some correction in the areas of asymmetry. So हम्म. here you give 2 boluses each into the upper and the lower lip हम्म. like this. One bolus here, one bolus here, one here, and one here. And the And needle direction should be like this only, na? yeah, it should be like this. Or you can go like you can invert the lip and go directly straight also. Like from here also you can go. Okay, right, right, right. I prefer going Okay. straight And vertical. Like invert the lip and go straight. straight. Okay. From the wet tissue आप हाँ, जाते हो अंदर. wet dry junction of the wet Okay. straight into it. वहां से आप अंदर जाते हो. हाँ, Okay, right. so this. Okay. So and the depth at which the needle should be when we, it should be a tenting effect, na? Right, Tenting होना चाहिए. right. We should not see the blanching of the needle. No We should, blanching. Just some tissue over the needle should be there. The sharpness of the bevel should not be seen. That is when you're yes, yes. intramuscular, right? So that Okay, is okay, intramuscular, this points. So this you can do, you can go horizontally also, or this you can go vertically from above, below. okay. In the upper lip, you can go from beneath, like here. In the lower lip, you can go from above.
You can invert and go from. Okay. See, the direction of the needle, the angle of the needle, it all depends on your dexterity, the ease. Yeah, समझ गई मैं. You know, usually, Hmm. I find the dermat chair is not very comfort. The salon chair, is very perfect for fillers actually. Dermat chair is very Exactly. difficult. हाँ, वो उसका जो एक तो इतनी वाइड बना देते हैं ना ये लोग, हाँ हाँ तो हाँ. उसमें क्या होता है कि पहले तो चेयर वाइड हो गया, फिर Yeah. उसके बाद उसके हैंड रेस्ट Hands. लगा देते हैं गलत Yes, तरीके yes, से. yes. उससे ज्यादा कंफर्टेबल डेंटल चेयर होता है. But then वो dental chair स्लीक on होता one है. side it has that blockage. वाटर इन एवरीथिंग. या यू आर राइट. उसमें आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है, तो मे बी सलोन चेयर वुड बी द बेस्ट कि उसमें Salon आप chair is 360 best. I डिग्री. worked on, VLCC. The salon chair is amazing. It's so, I mean, comforting and relaxable. Life में मुझे कभी time मिला मैं कंपनी खोलूंगी जैसे salon chair बनेगी वो aesthetic chair होएगी. Because ओके 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 यार. you get just the appropriate angulation and हाँ. depth and in the salon chair. दरअसल ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ इसमें डर्मा चेयर में आता है. हाँ, हेडरेस्ट, ये हैंड रेस्ट ऊपर कर दो तो दिक्कत है, नीचे वो छोड़ दो दिक्कत तो दिक्कत है. वो अड़ता ही अड़ता है बीच में ना. है. तो कई बार मुझे भी लगता है, फिर मैं पेशेंट को हम ऊपर नीचे करते रहते हैं भाई, कहीं हाँ, पे तो एंगल बने. फिर साथ में फोटोग्राफी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि फोटोग्राफी उधर होती से एक पेशेंट दिखना चाहिए, है. ये नहीं होना चाहिए. तो वो रहता है. So it's like that. So here you give 0.25 ml in the upper lip per bolus and in the lower lip 0.3 in the lower lip. 27 gauge sharp needle. ओके. And in this you can give slightly massage because the volume is less. When the volume is more, हम्म. so what happens? The tissues are not maybe prepared to hold that much of volume. So with the movement, there are chances of migration. When the volume is less, chances of migration are less. यस यस. ओके. सो जो माइग्रेशन रहता है वो एग्जैक्टली किस it is the chances of migration are more with the massage, or just like when you even leave it like this, there Even may be leave it migration like of lip this, fillers. with massage also Okay. they become high, but even if you leave it like that, so they migrate vertically, lip fillers. Okay, so I think then the space between the filler and this your upper border should be Hmm. good enough then. Should be good enough. And हाँ, your middle ताकि. entry point, you draw the bolus. You can draw the where you need, and the entry point middle should be in the center of that bolus. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. हाँ, हम ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से, हाँ, और pencil. पेन से, व्हाइट पेन से, और उस पे लगा के, और हाँ. बिल्कुल उसके सेंटर में दो, ताकि अगर वो हाइड्रेट होके माइग्रेट भी करेगा, Hmm. तो इट विल बी विद इन द बॉर्डर एरिया ओनली. It'll even if इट it विल नॉट. migrates a little bit, it will add to your result rather than make it हाँ. हाँ. गॉट इट गॉट इट. सो लोकेशन आई गॉट इट. 0.25 ऊपर एंड 0.3 नीचे. नीचे. ठीक है. ठीक है ना? ओके. So this can आई work. नेवर डन. पता Sorry. नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद एकदम, आई हैव नेवर डन दिस बोलस टेक्निक, तो मुझे लग रहा है दिस विल definitely work in cases where Median people medium. want good. Hmm. Yeah, yes, So what yes, I yes. usually do when what you said was that they don't want the lateral width widening, they don't want. So you do give four boluses like this, and here you do just the border. Along with this Okay. border, you do border over here, only border, no volumization over here. So in some cases, Or the lateral. yeah. So we are doing four boluses Okay. first, right? Then we start Okay, with the got border. it. So we do this border and then we do this border. Okay. Border, you just can't leave half, no? You can't do just this Yes, and yes, yes. Yes. so maybe you can Hmm. do border here a little bit more, Hmm. and here you can reduce the border because already we are doing the bolus and this bolus would have everted the lip out. Exactly. And what about the width in the lateral part of the lips, especially lower? You want to increase or decrease? Lateral part, if you want to increase. So if you want to increase, then you can do fanning. अच्छा, वही वाला सेम हाँ टेक्निक. हाँ हाँ. ठीक है. अगर अगर आप यहाँ ओके. पे फैनिंग करोगे तो वो अपने आप ही विड्थ वाइड हो जाएगा. No, no, not this. The height, अच्छा, you want to not increase the this width. height, Height. Yeah, eversion. height. हाँ. You want to create eversion. हाँ, I want to create height. So here Height you, at the lateral part of the body. This part. yeah. So again, you little bit of fanning, but product use would be less.
start from here, start doing here, but use less of product. Okay, I should start from medially, na? No, insertion point here Laterally. and do fanning like this. Okay. 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 Right. Okay. And if you want to increase the width, then you can make your entry point somewhere here and then do Okay. amount Means of fanning. right. जितना width बढ़ाना है हमें उसके लिए Lateral हमें होते एंट्री जा पॉइंट रहे बिल्कुल उतना ही lateral जाएंगे और जितना ही width कम करना है और पाउटी करना है हैं। तो हाँ, हमें हमारा medial placement ज्यादा होगा ज्यादा कलर का. होना चाहिए. Right. Okay. And Right. you can do Got it. marking also. With the pencil, you can Okay. mark. Hmm. Vertical marks आप Okay. लगाओ कि this is my medial and this is the most lateral I can go. Okay. And वहां पे fanning करना है और वहां boluses देने हैं. ठीक है. हाँ. Got it. So this is now third technique is, which is again extreme volumization, multiple injection technique. This is your Julie Horn technique. Okay. So it is the current beautification trend. It is also, some people also call it Russian lips. This is what your model wants it. I think this is what your patient wants. So this is an extremely versatile technique. Needle is inserted at the lip contour. Bevel is facing up, aiming forward towards the oral fissure. So when you're in the middle of the lips, you inject anterogradely, and when you're in the lateral aspect, you inject retrograde. But this again is up to your discretion. So this is how you do your injection point. So you have to start medially first. Yeah. What you can do, make small white pencil marks, how many injection points you are going to make everywhere, and then you insert the needle, start injecting. You can, I prefer retrograde injection more comfortable And I as. prefer retrograde injections. So you start from here, and then put a drop over here. Hmm. This is again Russian. So make the entry points, mark the entry points with a pencil, and then start injecting. So 0.0. And in this, the entry point should be within the vermilion border only, na? It Slightly should not be at the border. no. From हाँ. actually, it is always better to start slightly from the this place. There is the Yes. border and slightly from the Exactly. inner aspect. Now, what is the problem is there that the lips are curved and your needle is straight, right? Yes. What you can do is you can just with the non-injecting hand invert the lip and make at least your injection area straight, so that you don't have to manipulate your needle like this again and again. Here, Exactly. Yeah. I take Q-tip and press the lips. huh. So There, and then I do it. yeah, another thing is that what I was going to say was that भूल गई मैं. कोई बात नहीं, याद आ जाए. Right? ठीक है. So invert the lips and start injecting. Invert the lips, make the injection point straight at least. And here, this is the best for BD syringe. That's what I was. हाँ, decanting के साथ कर सकते हैं Here BD it के works साथ. pretty well. So you can, fill the product in 4 syringes for each quadrant. 1, 2, 3, 4. So you know how much product you are keeping for each quadrant. I did the same thing in I did not decant already मतलब although but I did the same technique in that case. ये जो है लड़का शिवम हाँ. इसके अंदर मैंने इधर से मीडियली तो मैंने सारा रशियन दिया जो साइड्स था इसका साइड्स आई गेव हिम दैट लैटरल फैनिंग साइड्स आई गेव हिम लैटरल फैनिंग So, बट मुझे लग रहा है कि वो बात आई थिंक इसमें बोलस वर्क करेगा. हाँ, इसमें बोलस वर्क है बिकॉज ही वांट्स मिडली, इसको ज्यादा चाहिए ना. मिडिल पाउट हाँ उसको वो यंग लिप्स, नो डाउट यंग लिप्स के लिए है, एल्डरली लिप्स के लिए नहीं है रशियन लिप टेक्निक. But where extreme volumization is desired, and he has somebody who's having already voluptuous lips, for them this will work because they want slight this thing. But आपके जो client है उसके जो demands हैं उसके लिए I feel the bolus, medial boluses and lateral fanning would work best. And in the second session, you can do this on top of that. This technique can be done on top of the first technique after a span of 15 days if he wants even more volumization. ठीक है. So because those injection points would be intramuscular,
and these Hmm. will be superficial, Okay. right? Okay. Hmm. So here in this technique in isolation, you can go 1 to 2 ml per session. And again, no massage, because product migration can happen very easily. It's very superficial. And one of the Hmm. disadvantages of this is that it is highly traumatizing to the patient. So your Hmm. patient has to be mentally prepared to take that much of, discomfort. Hmm. Some patients, they want lip filler, but they're very fragile, especially models. Hmm. The pain taking Hmm. capacity is very low. So there you, Hmm. plan a technique where injection points are minimum. Minimum, yeah. But At some times I have to some charged up. intraoral anesthesia also हाँ, हाँ, because वो numbing से बात नहीं बनती है. हाँ. But they I say give them that intraoral. intraoral anesthesia is not required because pain is again a protective mechanism. Hmm. Hmm. If Hmm. you completely numb that area, then you are, letting your guards fall off. Exactly, yeah. ठीक है. If you are into a vessel, patient will not be able to Not tell you. because sometimes slight wincing, if they slightly wince, either you've hurt a nerve or you're into the vessel. You've hit a vessel. Exactly. Then you become a Exactly. little bit Exactly. alert, and then you can Yeah. maybe. Change the direction. Mhm. Right. So Okay. this technique is very high. So the patient has to be completely, charged up for getting something done and completely uh, up for it, Yes, yeah. Highly motivating patients. Very मतलब motivating. जो really want it by themselves. Yeah, yeah. Lip filler आप किसी को जबरदस्ती, that is the only filler where you can't motivate your patient to take Yes, it. It yes, is something patient comes with the demand of lip filler. exactly. They motivate you to do a lip filler for them. Exactly. Yeah, lip filler ही ऐसा होता है. You can tell eye under eye, you can tell mid face, Yeah. but you will never say lips to your patient because patient को लगेगा नहीं मैं तो पता नहीं क्या हो जाऊंगा. हाँ. मेरा लिप फिलर होता मेरे को भी पता नहीं मेरा फेस ही मैं वो राखी सावंत समझने लग जाते हैं एकदम ना. Exactly. So these celebrities, they set up such bad examples of stuff. एग्जैक्टली हाँ. And the thing is that they are कराने. enjoying it. They like it like that. वो तो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप तो घुसाओ, आप तो 4 ml करो. Because हाँ. they like it. But then people take it other way. People think that lip filler के बाद ऐसे ही हो जाते हैं. It's not like that. Exactly. Then you have to show your examples, your cases. See, this Yes. is what after lip filler is. हाँ. And hydration के बाद तो rather lip filler और कम हो जाता है after 15 days. हाँ. Initially swelling बहुत जल्दी आती है तो वो लिप ज्यादा swelled up रहते हैं. But this product, Okay. Restylane का जो है, इसको जब भी आप मसाज करते हो, तो it becomes हम्म. plumped up again. Even after 1 month also I've seen. Whenever you massage it, अच्छा. ये दोबारा से फूलने लग हम्म. जाता है, पता नहीं क्यों. अच्छा. बट इसमें स्वेलिंग कम आती है और हाँ. इसमें जो आप जितना देते हो उसमें बहुत कम वेरिएशन आता है बहुत. Variation, yeah. मीन्स इसमें करते हुए ना हम्म. स्वेलिंग बहुत कम आती है बट आई हैव डन विद सेफा फिलर. मैं पहले करती थी. हाँ. सेफा फिलर तो देते देते लिप्स बलून हो जाते थे देते देते ही. हाँ. तो हाँ. मुझे ऐसा लगता था यार ये तो अब समझ ही नहीं आएगा आगे कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है. Right, right. लेकिन रेसलिंग के इसके साथ क्या है कि पेशेंट को पेन भी कम होता है आप इजीली वॉक करते रहो और हम्म. लंपी नहीं है बिल्कुल भी फिलर. आप हाँ. जूली हॉर्न ने एक टेक्निक Very, बताई है yeah, नेल्स yeah. को इसको स्प्रेड करो. हाँ, सो आई हाँ, स्प्रेड इट विद टिप ऑफ माय नेल. सिर्फ हाँ. उधर उधर ही करना है उसको. Right. So this is what I do and one more thing I wanted to discuss about. हाँ, there is one site Pure Health Aesthetics Okay. इंस्टाग्राम पे. व्हाट शी डज इज वो ठीक है वो लोग बहुत पाउटी लिप्स होते हैं उनके. वो शी पिक्स अप दिस कॉर्नर दिस फिल्ट्रम. हम्म. शी पिक्स अप दिस पॉइंट यहाँ से एंटर करती है एंड देन शी गो डू वरी एंड देन शी डू फैनिंग हम्म. like this हम्म. and this हम्म. in this part and similarly here like this हाँ. and this. हम्म. So दोनों में फैनिंग करती है फैनिंग करके एंड देन शी फिल्स अप द रेस्ट ऑफ द फिलर. चलो, in the प्योर हेल्थ lateral. उसके. And if you have seen Beauty by Dr. K, she always takes the lip contour. हम्म. I don't She's a know. plastic surgeon. Okay. Beauty by Dr. K. डॉक्टर के है एक ना. तो हाँ, शी इज अ प्लास्टिक सर्जन. वो हमेशा बॉर्डर फिल करती है और उसके नीचे ही उसी एंगल पे नॉर्मल एक रेट्रोग्रेड से करती आती हैं. हाँ, हाँ. तो अलग अलग टेक्निक्स हैं. So people develop their own techniques, with time you see what you are more comfortable with.
And according to the demand of a patient, Yes, demand of the किस patient. पे कौन सा टेक्निक जाएगा, हाँ, राइट? कौन सा? अब And here in your patient that we are discussing, उसको broad lips already हैं, है ना? उसको feminish करने हैं. So that means you need to work more medially, center of the lips. ओके, ओके, राइट, 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 ठीक है. सो उसका ऑलरेडी ट्यूबरकल्स थे, उसको और अभी हम उसमें ऐड करके उसको सेंटर को और पाउटी कर देते हैं. सेंटर को और पाउटी कर दो और लैटरल में आप सिर्फ डेफिनेशन वो कर दो, वर्मिलियन बॉर्डर. बॉर्डर, बस, ठीक है, Right, so I ठीक think है, that राइट. will do. And then if you बट want even more, then you can do Russian lips. ये जो हमने last technique discuss की है, on top of that technique. So I'll ओके, share this एंड photo. लैटरल पार्ट में जब विड्थ अगर हमें वैसे मुझे लग रहा है कि जब हम सेंटर कर देंगे ना, कर तो देंगे ना. लैटरल का विड्थ, तो लैटरल अपने आप ही सेटल्ड लगेगा पेशेंट को. हाँ, lateral अपने आप ही कम हो जाएगा अगर आप lateral को टच नहीं करते हो उसमें. You do only the medial aspect. तो वो अपने आप ही it will be handled. Because उसको feminist चाहिए, and feminist lips are basically more contoured in like that. मतलब they are less, the width is less and the height is more as compared to. एग्जैक्ट, उसका जैसे वो लिपस्टिक लगा रहा है उसे समझ आ रहा है, हाँ, उसको वैसे ही चाहिए. बिल्कुल ही हार्ट शेप लिप्स चाहिए उसको. हाँ, heart shape lips चाहिए, right. शेप लिप्स चाहिए, ओके, गॉट इट. So for making it more heart shape, you can do little bit cupid also कर सकते हो, थोड़ा सा और उसको ओके, करने के लिए, because जो उसने वो वीडियो भेजी है ना, that is exactly medial tubercles and cupid. ओके, And ठीक last है, में उसको ठीक. अगर थोड़ा सा कॉर्नर, माउथ का कॉर्नर अपटर्न करना है, वेरी हाँ, कई चैलेंजिंग. बार कहते हैं मुझे हाँ, चाहिए. हाँ, तो वो उसके लिए हम एक और डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू ओके, अपटर्न. ओके, ओके, तो उसके लिए वी हैव टू, ठीक है, विल टेक अनदर क्लास फॉर दैट. हाँ, उसके लिए डिफरेंट क्लास होगी उसमें, अप टर्न बिकॉज करेंगे हाँ, जब, देयर हाँ, आर आल्सो पेशेंट्स थ्री वांट फोर टू. टेक्निक्स. ओके, राइट, But राइट, then राइट, राइट. upturning is done always when after you've done the first, you do the medial lips, then you do lateral lips, then you do the up corner of the mouth, and then you do the perioral. And आपके पेशेंट को जो है उसको चिन भी चाहिए, his chin is very retruded. हाँ, या मैंने उसको बोला है, पहले तो वो कह रहा था मैं चिन इम्प्लांट लूंगा, अब वो कह रहा है इम्प्लांट मैम में दे देना देखो फिलर, व्हाट आई इज डोंट. इट, इम्प्लांट में प्रॉब्लम क्या है, दैट द मैंडिबल इज एवर चेंजिंग थ्रू आउट लाइफ. Right. So हम्म, you need something which is more flexible over there, because this area is very mobile, hypermobile area on the face, the only mobile area, speaking, talking, eating, everything. Right. या. Implant की जो है, later on what happens, implant की जो life है at least 10 years तो होगी. और 10 years में mandible कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा. हम्म, And also implant is for cases जहाँ पे accident होके पूरा ही some damage has been done. हम्म. In aesthetics we are looking for fine corrections. Yeah, I have given him Botox last time, Mhm. 3 units, both Okay. sides. Mentalis. Okay, and I have given around 0.7 to 8 ml of filler in mental sulcus, Okay. this mentolabial sulcus. बट Okay. मुझे लग रहा था मैं फिलर दे रही थी, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था जितना फिलर आपको जा रहा था. you need to give the jaw. Have you done the chin and jawline? नहीं, 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 वो ही वांट्स चिन नाउ. हाँ, so chin पहले देना पड़ेगा आपको. Lips तो लास्ट में करते हैं एक्चुअली, पर ठीक है. Chin में you ओके, need to give the C2 point and C15. अराउंड. You need to elongate the chin because chin बहुत deficient है. हाँ, वो ठीक है, इट्स लाइक विच चिन इज कॉल्ड एज, जिसमें ये Dimple होता है. क्लीवेज है हाँ, प्रॉपर ना, chin हाँ. के अंदर. सो मेरे को लगा ये मेंटालिस इसकी बहुत स्ट्रांग है, तो हम्म. मैंने इसलिए उसके अंदर 3 यूनिट डाल दिया. तो मैं कहा हम्म. जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा मेंटालिस रिलैक्स हो जाएगी, फिर हम फिलर दे देंगे हाँ, इसको फिर इधर. filler दे दोगे. So you need elongation. After elongation, then you can add little more into the labiometal crease if it is required. एंड जब भी आप ओके, लेबियोमेंटल क्रीज जैसे ही करोगे, लोअर लिप वैसे ही वर्ट और हो जाएगा. और बट हो जाता है, राइट. ओके, सो मेंटलेवियल क्रीज करने के लिए मैं इधर से ही गई थी, यहाँ से गए ऐसे जाके दिया, सो मुझे विद अ लगा कि निडल इधर से और अ जाके. कैनुला, यू डिड अ निडल और अ कैनुला. निडल, सो मिड नीडल से लाइन से इधर इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे, आइदर साइड ऑफ द हाँ, मिड. ऐसे. एंड यू हैव टू बी एंड इट सुपरफिशियल. हैज टू बी, सॉरी. it has to be bolus or fanning retrograde. No, it was a linear threading, linear retrograde. Linear threading. And you can do I fanning did. also. Fanning also. So mark the midline, mark the mental artery ka location, and in between you have to be there.
ओके, राइट राइट। और वो मैंने किया, उसको दिया तो है। इस दिस टाइम आई विल मोटिवेट हिम कि उसको चिन लेना चाहिए। तो एक्चुअली chin ना is पहले one वो area, हाँ। हम्म। ही वांट्स कि उसका ना लिप पहले ठीक हो। तो अभी तो वो मुझे लास्ट टाइम तो ही टुक 2 syringes। तो ही हम्म। वाज रेडी टू टेक मोर syringes एंड ऑल दैट। हम्म। देन अभी इस बार उसको अभी लिप्स से ही इज नॉट, अभी लिप्स ना थोड़े से उसके अनइवन भी हैं। आपने देखा होगा राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट हाँ। कम है। हम्म। सो हाँ, वो मुझे इस बार कंप्लीट करना है। और मोर ओवर उसको है पहले मेरे लिप्स बन जाए, हम्म। देन ही हैव कॉन्फिडेंस इन मी फॉर द चिन फिलर आई सपोज। हाँ ठीक है, सो आप अभी पहले लिप करो एंड लिप करते करते बोल दो कि लिप एंड चिन जो है वो एक साथ होते हैं, मतलब दिस इज वन यूनिट ओनली, दे आर नॉट सेपरेट, you know. The chin ओके, is like राइट a राइट। table and lips are like the flower pot on the table, you know. तो ओके, पहले राइट टेबल राइट। को आप ठीक करोगे तभी आप उसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम रखोगे, बट ठीक है आपने पहले डेकोरेटिव आइटम रख दिया, बट यू नीड टू वर्क ऑन द टेबल ऑल्सो। ओके, राइट, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। एक और पेशेंट है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी। हाँ उसका लिप हाँ फिलर मैंने किया, मैंने पहले भी किया था अराउंड 1 year बैक। हाँ। अभी दोबारा किया है। वो भी ना कुछ पिक्चर्स मुझे दिखाती है कि मुझे ना मैम एग्जैक्टली ऐसे चाहिए। हम्म। वो क्या कहती है कि उसको जो ये होता है ना, क्यूपिड जो होता है, हाँ हाँ। उसको क्लोज, थोड़ा सा क्लोज्ड। और So how या can you close the angle of the cupid? It is by the medial tubercle on both sides. The moment you put them, this becomes acute. सिर्फ यहाँ पे डालना है मिडिल ट्यूबरकल्स Medial के अंदर? tubercle, वो जो हमने टेक्निक देखी है ना एक बार, हाँ, मैं समझ गई, पैनिंग से मीडियल ट्यूबरकल कर रही है। ये वाले ये, द मोमेंट यू अच्छा, ओ। इंजेक्ट दिस 2 points, ये अपने आप ये हो हम्म। जाएगा क्यूपिड, और दिस एंगल विल बिकम लिटिल बिट मोर क्लोज्ड। ओके, एंड समबडी वांट्स कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, तो नहीं, स्ट्रेच के लिए तो कोई भी नहीं कहता। स्ट्रेच के लिए तो एवरीबडी नहीं, वांट्स। साइन ऑफ एजिंग, ओके, everybody will ask for this only. So what you can do, first step is the medial tubercles, and then you can do slightly boundaries over here, the border. ओके। एंड सम पीपल हैव सीन इंजेक्टिंग इनटू दिस Filtral फिल्ट्रम, column. दिस इज Hmm. फिल्ट्रम। हाँ So filtered हाँ, column, तो if the natural anatomy has a filtrum, then you can do, हम्म entry point you can do, you can pinch the skin like this, make an entry point हम्म। here, go up till here, start injecting like this, 2 lines like this. Not parallel, ओके slightly close over here. And you have to be on the inner side of the filter column. ओके ओके ओके, ठीक है, राइट। ओके, सो दिस बोलस वाला This is पॉइंट। linear threading. So Okay. It should be under the bulge or medial to the bulge. medial to the bulge, Already there. medial to the bulge. Medial to the- Okay, right, right, right. ठीक है। ठीक है ना, slightly medial to Okay, the okay. bulge like this. मैं आपको अभी तो अच्छा, अभी आप व्हाट्सएप पे मैं एक बार भेजूँ आपको वो इमेज, हाँ या हाँ मुझे आप बाद व्हाट्सएप, में बता दो? नहीं नहीं व्हाट्सएप पे भेज या दो। ओके। Fine. So this angle will become acute the moment you fill these tubercles. And then after यस you've done यस। this, then you can fill this border. And if natural anatomy has the filter column and they have blunted out, then you can add definition. If naturally they never had filter columns, then I don't think you should try to create. ओके ओके। Then just put one अभी bolus, इसको slide little कितने bolus away. Sorry. ओके, मैंने आपको भेजा है। Okay. इसको कितना ही लिप फिलर कर दो, ये ऊपर बॉर्डर जरूर बनाती है। अभी मैं सेकंड टाइम फिलर लेके गई है मुझसे पेशेंट, हाँ अब उसके बाद भी ऊपर बॉर्डर बना रही है। इसका मतलब इसको मीडियल टुबर्कल्स देने पड़ेंगे ना मुझे? हाँ मिडिल टू वर्कर, इसने लिपस्टिक देखो ना, लिपस्टिक अपने बॉर्डर के बाहर लगाई हुई है, ऐसी लिपस्टिक बिहेवियर्स जो वो है मैं ना वही वो, बोल लिपस्टिक रही, मैं उसको बिहेवियर बार कैन बार इंडिकेट यू, दे कैन गिव एन इंडिकेशन कि पर्सन को क्या चाहिए। और इसने जो लिपस्टिक मिरर। बॉर्डर बाहर बनाया है वो सिर्फ मीडियली बनाया है, लैटरली नहीं बनाया है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली तो गिव अ एग्जैक्टली। मीडियल टुबर्कल्स, खत्म, मीडियल टुबर्कल्स एंड स्लाइटली क्यूपिड बॉर्डर, दिस filtral is not required over here. ठीक है ठीक है, तो मैं इसको मिडिल टुबर्कल दूंगी, शी विल बी हैप्पी देन, है ना? एंड प्लस लिपस्टिक कलर, लिपस्टिक बिहेवियर जो है ना उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ दे क्रिएट द बॉर्डर, व्हाट द कलर चॉइस, द ब्राइट बोल्ड कलर्स, दे वांट नोटिसेबल लिप्स, या शी वांट्स नोटिसेबल लिप्स, राइट राइट। से पता चल अभी जाएगा। इसी का पर किया था, शी वाज गोइंग फॉर प्लास्टिक सर्जरी, उसको हम्म। जरूरत भी नहीं था। मैं फिर हम्म। क्या कहती, मैम दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड यू डिड इट इन 2 syringes। हम्म।
I wanted this lift only, हाँ, and मैं तो सोच रही थी यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करा लेती हूँ, and she's just 38 years old. मैं कहा, you वो have such a good skin, such a प्लास्टिक good सर्जरी जो है face, वो नेचुरल एक्सप्रेशंस को ब्लंट आउट कर देता है. इट डज नॉट गिव and यू. you plastic surgery is for the people, who have literally sagging skin. उनके लिए रहता है. सो तो लिप करने वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्व द लिपस्टिक बिहेवियर्स. अगर वो लिप हाँ, बॉर्डर बाहर ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स उसी एरिया में उनको पाउच चाहिए. एंड जो लिपस्टिक का कलर है अगर न्यूड्स है तो उनको हाइड्रेशन कर दो. और अगर ब्राइट लिप कलर्स हैं दे नीड फुल फ्लेज नोटिसेबल लिप्स. राइट. अच्छा, कैन वी डिस्कस CK4 एंड CK5? अच्छा, जैसे मैंने क्या देखती हूँ ना, मैंने आपको एक दो इमेजेस भेजूंगी. व्हाट आई हैव सीन इज कि यहाँ से चीक बोन शुरू होके ना, जो एक इस पॉइंट पे जो फुलनेस होती है ना, हाँ जो हाँ कॉन्टिन्यूएशन, दैट लुक सो सो नेचुरल एंड सो यूथफुल. हाँ जो हाँ. ये चीज आती है ऐसे यस, आके, इट्स कॉल्ड द ये नाइकी साइन. ट्रायंगल. नाइकी साइन. हाँ, अच्छा, या नाइकी साइन, एग्जैक्टली. मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ ना, जैसे कोई भी जिसके अच्छा होते हैं ऐसे, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लेती हूँ. तो मैं सोच रही थी मैं ना डॉक्टर भावना को भेजूंगी, डॉक्टर उनको बोलूंगी मुझे ना ये वाला सिखा दो. हाँ तो वो आप भेजो मेरे को वीडियोस भेजो. आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली दैट कैन बी डन. ओके, राइट राइट, बेसिकली दिस थिंग, या दिस थिंग. ओके. इसके लिए एक आप अलग मुझे से स्पेशल CK4. टेक्निक है जो कि एमडी कोड्स में नहीं है, जो कि और किसी में नहीं है. इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ. इट्स कॉल्ड स्टैकिंग टेक्निक. आई विल टेल यू. जस्ट सेंड मी द पिक्चर्स. ओके, एंड इस पेशेंट में एक प्रॉब्लम और अभी भी इसको लगती है. मैंने हालांकि लिफ्ट दिया है इसको, हम्म CK1 दिया, CK3 दिया, इधर भी दिया मैंने इसको फिलर. अभी भी इसको ना, जो ये मैरियोनेट है, वो हम्म कहीं ना कहीं इसको लगता है कि अभी भी मैम अगर हम यहाँ से थोड़ा लिफ्ट कर देंगे ना, कहती है मैम हम्म. यहाँ से थोड़ा लिफ्ट कर देंगे ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. तो तब इसके मुझे लगता है इसको मुझे लिए CK. सेंड द फोटो एंड द रिक्वायरमेंट एंड मैं आपको बना के भेज दूंगी प्लान. ठीक है, राइट एंड राइट ये राइट. फोटो जो भेजी है ना दिस इज नॉट करेक्ट. मतलब थोड़ा सा प्रोफाइल या प्रॉपर. नहीं, ये वाला पिक्चर तो उसने खुद भेजा था मुझे, तो मेरे को एकदम याद आया कि मैं इससे आपको उसके लिप्स अगर दिखाऊं तो वो कुछ मतलब समहाउ आई गॉट इट. मैं आई हैव नेवर डन ट्यूबरकल्स लाइक दिस, तो मुझे लग रहा है